Sounds good. Firstly, thank you so much for having me, and thank you so much, everyone, for joining this session this afternoon. Really looking forward to interact with many of you in the today's session. I think before we even start anything, I would love to see you all turning on your cameras, if that's easier. We are in different kind of world altogether where we can't be in person. I can't see you, you can't, but at least if we can't be together offline, let's try to be together online and you know turn on your cams if that's comfortable. So पहली चीज तो हो गई कि सब लोग कैमरा ऑन कर लो तो इजी रहेगा बातचीत करना. I don't want it to be a monologue where I'm the one speaking and you're the one just listening. Ideally, I would like to have a conversation with all of you. So that's my first request. आप लोग क्या चाहते हैं बताइए. बातचीत करना चाहते हैं या केवल मेरे को सुनना चाहते हैं? किस लिए आप लोगों ने ज्वाइन किया है सेशन? Why don't you write in the chat or unmute yourself and speak up? Why are you here? What do you want to get out of this session? Anyone? Anyone wants to unmute and speak up? कोई भी नहीं. किसी को तो बोलना पसंद होगा ना यार मेरे अलावा. Sir, I guess we want to learn about what goes in on research or analysis part before we start a startup. Okay, thank you. Anyone else? What are your expectations from this session? देखो तुम लोग मुझे बताओगे तो मेरे लिए इजी रहेगा कि मुझे क्या कवर करना है क्या नहीं. Hello. Hello, yes Pranav. Yeah, hi sir. So basically, I am on ideation stage right now, and I have filtered two ideas. So I am in a dilemma. What all factors should be kept in mind for choosing one idea out of these multiple ones. So basically, how can I do market research for both of them and finally come to one conclusion? Okay, so Pranav, can you also write it down in the chat? Deciding between two Yeah, ideas, sure. basically. Yeah, sure. Thanks, Pranav. Yeah, thank you, sir. Before I even start this session, I would like all of you to open up and share a little bit about yourself. Um, that helps me set the tone. That helps me being relevant to all of you. Otherwise, मैं अपनी बकबक करके चला जाऊंगा और तुम लोग कहोगे कि ये क्या हो गया? What really happened? And I want you to make sure you connect and make the best out of this session. So let's take a minute to just opening yourself up. Any particular questions, pressing issues that you would like to discuss on this call related to startup? So before the startup, actually, what is stopping you? So let's take a minute. I think let's start the session this way. Let's take a minute to reflect and think what is stopping you, or what is the hindrance you are experiencing before you start the startup. So take a minute, write it down in the chat. And I think the more answers I will get, I will see more of you are engaged.
See, remember one thing, this is not a traditional classroom or, like where I'm the one supposed to speak. Uh, nice. So, how to find market size and potential for my idea, market research, creating a niche. Thank you, Kirti. Thanks, Pranav. Here, there are 60 people on this call, and I'm getting a response from 2 people. Thanks, Dinesh. Mm-hmm. Hi, Alap. Thank you. Good to see you. No more questions? Okay, don't know where to start. Okay, that's a good start. So there are almost 60 people here. So firstly, thanks everyone. How to start is the main question. Okay. Okay. How many of you are actually startup founders here? Write down in the chat if you are a startup founder saying, yes, founder, I'm a startup founder. Or if you're already running a startup, or if you're already working on an idea. Why don't you write on the chat? Working on an idea. Okay. Expectation, how to make connections related to the product you want to develop. Okay. Working to build my idea and filtering it. Yeah. Okay. Well, thank you. चलो जितना है वहीं से शुरू करते हैं फिर. There are many more students also. Okay. Okay. Drishti, shall we begin or shall we wait for other students then in that case? No, let's start. So they're joining slowly and gradually, so we can start. Okay, perfect. So I have only one request from all of you. Make sure you keep this conversation really interactive, and feel free to ask and jump in the questions. Raise your hand or message in the chat, and I will try to cover as much as I can. I have not prepared any presentation for this because first I really wanted to know all of you and listen what you want to know before we even get into jumping on this session. So let's start. I think first question when it comes to my mind before a startup is why. Everything else comes really later on for me. The why is the first thing. Why do I want to do a startup? Why it is really important? Why I should do it, or why I should do this with this team, or the why behind a startup is very, very important. If you have clarity about your own why, then it'll be much easier for you to go out and do it. It's easy to come up with ideas. We come up with so many ideas are all everywhere. The most important thing is what really happens with those ideas. What do we do with those ideas, right? वो ideas जात चले कहाँ जाते हैं? सारे तो execute होते ही नहीं है. क्यों नहीं होते? Apart from many other reasons, one main reason is actually there is no strong conviction in the founders why they want to work on that idea or why they want to solve that problem. So why मेरे लिए सबसे important होता है to understand the problem I'm trying to solve. मैं वो करना क्यों चाह रहा हूँ? And I'm assuming I think all of you are comfortable with Hindi and English. English? Okay. I'll try to keep it English then.
So I think why I'm doing it, why does it really matter, why I should solve it. Have you identified the pain points? तुम ये किसके लिए solve कर रहे हो? Who are you trying to build this startup for? Who are the people who will get benefited by this? I think जब वो clarity आ जाती है ना कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं इन लोगों के लिए, या इससे इनको फायदा होगा, या इस स्टार्टअप को चालू करने से ये फायदा होगा, ये इम्पैक्ट आएगा, ये सोल्यूशन बिल्ड होगा, that brings so much of strong conviction. It can either be a strong, personal pain point कि आप लोगों ने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया हो या फेस किया हो या आपने लोगों को देखा हो, you saw, it around you all the time, and no one was doing anything about it. तो काफी स्ट्रॉन्ग जो आइडियाज होते हैं ना, उसकी फाउंडेशन वहीं से शुरू होती है. पर्सनल प्रॉब्लम्स और someone else they have seen experiencing it, pain points, and doing something about it. This could be personal, this could be also social problems, community related problems, this could be environment related problems, this could be national level problems, regional level problems. But most of the time it begins with a problem that you are trying to solve while building a startup. Is it clear, this part? How many of you agree with this? How many of you, those who are working on your idea, kind of know that you are working towards solving a problem? Why don't you write in the chat, what problem are you trying to solve? Chat mein likho yaar. No one is here to judge each other, okay? So feel free to write. Yes, Sanket, can you touch a topic about how and where we can get to know good ideas? Bata raha hu na. Problem, identify the problem. Good ideas, there is nothing called good idea or a bad idea, honestly. Sometimes, bad ideas, even executed well, works. So most important is to really know, like, how you refine even those bad ideas and translate into something concrete that can work, that can actually solve the problems. Ideas doesn't need to be, keep always out of the mind कि कभी किसी ने कुछ देखा ही नहीं हो, कुछ सोचा ही नहीं हो. Or there are ideas all sorts of small, and I always say ideas are not about how fancy the technology you are going to use. आइडिया होता है, एक प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए तुम एक सिंपल टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हो और एक डिफिकल्ट भी कर सकते हो, एक लो टेक भी यूज कर सकते हो, एक हाई टेक भी यूज कर सकते हो. Those are all part of that journey of creating a solution. That doesn't always define the idea you're working on. No, it Hello. doesn't. Yes, someone is speaking here. I'm Kirti. Hi Kirti. Sir, can you tell us something about your startup Seed Stars? Yes, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. I think Seed Stars के बारे में. Yeah. But just to give you a background, what Seed Stars does is, we work in emerging markets around the world. जो developed countries नहीं है या developed regions नहीं है, like US or primarily Europe. So it's a Swiss company that is on a mission to helping entrepreneurs in emerging markets through technology, through entrepreneurship, helping solve the problems related to sustainable development goals. How can we help achieve SDGs? How can we help create more jobs locally? How can we help with economic impact, economic development in a region? और वो हम emerging markets में करते हैं, in Asia, in Africa, MENA region, Pacific Islands, Caribbean, Latin America, ये सारे in the global south. अगर आप world map देखते हो तो जो global south है, उस region के अंदर is where Seed Stars operates in. So that's in a nutshell what we do. But let me go through some of the questions that have come. I think deciding which ideas to choose between two ideas and how to do market research relevant to it. I think obviously you look at the feasibility, the viability of that idea also. But ये सब है ना बहुत early stage होता है. In the startup side मैं हमेशा यही कहता हूँ कि start somewhere. Idea कुछ भी हो, start somewhere. What can you do? Take the first step. Maybe let's start building an MVP, the minimum viable product for it. Maybe let's start doing some market research to even understand the scope and the potential of this. कि ये कहाँ तक जा सकता है. मैं
कितने लोगों से शुरू कर सकता हूँ, टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि मैं 5 लोगों को स्टार्टिंग में, let's try to work with only 5 potential customers, not necessarily the entire world. So हम लोग generally when we do market research, we look at total addressable market, total serviceable market, or obtainable market, like all of these big market size, हम पूरा वो research करते हैं to just identify कि कहाँ से शुरू होगा. Yes, I think there is a question around, is India a good option to begin? Absolutely. I think even before India, I would say start with one place, one locality, one small section. It's not always about that a startup has to be a global. Yes, it can be because of technology. That's how we leverage technology to make it like global. But most important thing is, it could be even a startup where you are hiring only 10 people or 15 people. It doesn't have to be, that fancy startup with thousands and thousands of employees. So core is that are you solving a problem? If that you're solving a problem, what are you doing about it? हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया है प्रॉब्लम, हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किन लोगों को ये प्रॉब्लम है, कहाँ रहते हैं ये लोग जिनको प्रॉब्लम है, what will it take to solve that problem for them, what kind of solution I should build that can start solving some part of that problem for them. आप शुरुआत में सब कुछ अचानक से सॉल्व नहीं कर सकते हो सबके लिए, but you have to start somewhere. And most of the times what I have noticed, people get stuck is this part कि यार हम शुरू कैसे करें, कहाँ से करें. It's too much, it can become really overwhelming. इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं बट पता नहीं लग रहा, like मैं शुरू मार्केट रिसर्च से करूं या मैं सीधा प्रोडक्ट बिल्ड कर लूं या मैं कस्टमर को समझूं पहले. And one common misconception and problem is we start building something before even understanding the pain points very well. हम अपने हिसाब से हमारे दिमाग में सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही बेस्ट तरीका है. And then we start working on developing a solution, keeping that in mind. We are not keeping potential customers और उनके पेन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रख रहे हम. तो हमें सबसे पहले कस्टमर इंटरव्यूज करना जरूरी है, पोटेंशियल कस्टमर इंटरव्यूज, मार्केट को वैलिडेशन, कस्टमर वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या प्रोडक्ट चाहते हैं, लोग का जो पेन पॉइंट है हम वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, व्हाट शुड वी बिल्ड टू बी एबल टू हेल्प देम सॉल्व दैट पेन. अगर वो कोई पेन पॉइंट के अराउंड नहीं है, वो कोई एक जनरल आप बहुत फैंसी आइडिया पे काम कर रहे हो, समथिंग न्यू टेक्नोलॉजी दैट यू आर, तब भी है ना वो किसी न किसी प्रॉब्लम को तो एड्रेस करता ही है. तो थिंक अबाउट दिस कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम फेस हो रहा है. हाउ बिग इज दिस मार्केट? वंस यू कैन आइडेंटिफाई द पीपल हु आर सफरिंग इन दैट टोटल एड्रेसेबल मार्केट, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस कितना बड़ा ग्रो हो सकता है. ये 300 मिलियन लोगों को टच करेगा या ये 1 बिलियन लोगों को टच करेगा या केवल 100,000 लोगों को टच करेगा, या ये केवल गुजरात के अंदर स्कोप है इसका, या केवल अहमदाबाद में स्कोप है, या इसका इंडिया लेवल पे स्कोप है, या पूरा ग्लोबल लेवल पे स्कोप है. क्या ऐसी प्रॉब्लम केवल अहमदाबाद में लोगों को है या एक्चुअली ये प्रॉब्लम बैंगलोर में भी है? कैन वी एक्चुअली स्केल दिस सोल्यूशन इन अ डिफरेंट मार्केट? ये सारी चीजें बाद में हो जाएगी. हमेशा ये ध्यान रखो, शुरुआत करते वक्त है ना, you may not have all the answers. So a lot of experiments are needed to be done. Experimentation वाला mindset बहुत जरूरी है, entrepreneurial mindset where you are actually doing some experiments and trying to learn from this. Capture data कि अच्छा ये सही पाथ पे था या मैं गलत पाथ पे था, ये मेरी मिस्टेक हो रही थी या like this was actually the good path I chose. So we learn by capturing the data if it is working or if it is not working. So एक बहुत फेमस टर्म है जो मैं यूज करना चाहता हूं here, called strong opinions loosely held. होता क्या है, हम लोग काफी बार ना इतने पजेसिव हो जाते हैं अपने सोल्यूशन को लेके कि मेरा ही सोल्यूशन बेस्ट है, इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी. बट जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, पोटेंशियल कस्टमर से, अंदर यू रियलाइज
यार उनका पेन पॉइंट तो कुछ और है, लाइक जिनको यूज करना है वो तो कुछ और पेन पॉइंट है. And then you learn something new from them, and then accordingly you pivot, you make changes. So सबसे important है mindset क्या है आपका जब आप कंपनी बिल्ड कर रहे हो. Are you open to learn new things? Are you open to learn from the customers and the users, from the market, from the feedback you receive from them? So collecting this data, this feedback is very important. और वो कैसे आता है? By doing experiments. कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे पता लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है या फेल हुआ. एंड इट्स ओके इफ दिस एक्सपेरिमेंट फेल्स, बिकॉज उससे एक वैलिडेशन हो गया आपका, इफ दिस इज वर्किंग और इफ दिस इज नॉट वर्किंग. मैं एक फीचर ऐड करना चाहता हूं अपने प्रोडक्ट में, बट देन आई रियलाइज्ड नहीं यार ये तो लोगों ने मना कर दिया. मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, I don't like the bigger font size or this kind of icons on the mobile screen. This doesn't work. Or you made it very small. We don't like it. So it's better that they learn from this feedback, the mobile manufacturing company, and they change it before they roll out this new operating system or, into the market, which has these bigger sizes and no option of, changing size. So it's very important to learn, keep learning, doing these experiments, and then move forward. Now, अब बात आती है, काफी बार, like how do we even begin? शुरू कैसे करें? This is the biggest question कि we are stuck. We don't have money. How many of you face this problem? कि यार पैसा चाहिए और पैसा तो है ही नहीं, शुरू कैसे करें आप? Write down in the chat. Can you relate with this problem? Kavanpreet, yes. Dinesh, yes. Who else? Can you relate with this? Everyone almost, right? So I think आप लोगों ने ये मॉडल का नाम सुना होगा, लीन स्टार्टअप मॉडल. एटलीस्ट स्टार्टअप साइड में, बिजनेस में तो टोटली बहुत डिफरेंट होता है. व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू ए ट्रेडिशनल बिजनेस एंड इफ इट रिक्वायर्स रियली हैवी इन्वेस्टमेंट, तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं उसके अंदर. आपको ऑब्वियसली प्रोजेक्ट का कॉस्ट इवेल्युएट करना है, इनिशियल मार्केट रिसर्च करनी है, मार्केट को समझना है, आपको सप्लाई देखनी है, आपको कौन प्रोडक्ट खरीदेगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर भी. कि मुझे इतना लोन लेना है या मुझे इतना मेरे पास इतना पैसा है, मैं यहाँ से लगाने वाला हूँ ये पैसा बिजनेस के लिए. यू लुक एट लॉट ऑफ दीज रिसर्च, पुट योर कैलकुलेशंस टुगेदर, थिंक अबाउट कि if this is something I can do or not, do I have the knowledge, do I have the right team to do this. बट स्टार्टअप के अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है. हम ये सब होमवर्क तो कर लेते हैं, बट स्टार्टअप के अंदर ना दिस होल investing ecosystem comes and supports also. We are trying to, we raise funds for it. We convince people by telling them the potential of this problem, the solution you are building, and convince them to be part of this journey with you. तो उसके लिए वो कन्विंस करने के लिए लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा ना प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं, ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट दैट कैन शोकेस द स्कोप ऑफ द वायबिलिटी of this product getting into the market and alleviating some of the pain points of your potential customer. समझ रहे हो, आपके पास पूरा सोल्यूशन रेडी नहीं है ना, आपके पास एक्चुअली इतना पैसा है कि आप पूरा सोल्यूशन बिल्ड कर सको एक बार में. तो आप छोटा सा कुछ बिल्ड करते हो और टेस्ट करते हो कि कि मैं इसके आगे और कुछ इसमें बिल्ड कर सकता हूं या नहीं. मैं अभी तो सोच रहा हूं कि whatever I will build will go well with customers. And then I realize मैंने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के, और बाद में पता लगा यार दिस इज सो इररिलेवेंट, लोगों को तो ये चाहिए ही नहीं, मैंने क्यों ऐसा कर दिया. तो आप पहले क्या करो, छोटा सा प्रोटोटाइप और एमवीपी बिल्ड कर लो, जिसके अंदर आपको 30 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है, 30,000 के अंदर काम हो जाएगा.
and then और invest कर दिया उसमें थोड़ा बहुत. तो smaller amount से you can start when you are working especially on technology based startups to get attention. Then you start, it's like not trying to, if you have to climb 5 floors, you can't jump directly from ground floor to first floor. आप एक फ्लोर चढ़ते हो और फिर 5th फ्लोर पे पहुंचते हो, और उस एक फ्लोर को चढ़ने के लिए भी यू डू लॉट ऑफ स्टेप्स, यू टेक वेरियस स्टेप्स टू हेल्प यू गेट टू द फर्स्ट फ्लोर. और काफी बार अगर आपको इन्वेस्टर मिल जाए जो शुरुआत में आपको स्टेज पे फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको इन्वेस्ट कर दे, तो आपको शायद वो सारी स्टेप्स नहीं चढ़नी होती है, आप वो लिफ्ट ले लेते हो जो आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे ले जाती है. तो वहां पे आपको ना इनिशियल एक किक ऑफ मिल गया, बूस्ट मिल गया, दैट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू रीच फर्स्ट फ्लोर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर. और शायद वो पैसा नहीं आया होता, ऐसा नहीं है कि तब भी आप पहुंचते नहीं, आप पहुंच तो जाते हैं, बट टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता टू गेट टू दैट फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि आपको सारी सीढ़ियां खुद से चढ़नी पड़ती. बट यहां पे एक इन्वेस्टर ने आके, एंजल ने आके आपको इनिशियल किक ऑफ कर दिया. तो व्हाट रियली आल्सो हेल्प्स इज द नेटवर्क, हाउ इन्वॉल्व्ड यू आर इनटू द कम्युनिटी, हाउ मच एक्सेस डू यू हैव विद द टैलेंट इन योर कम्युनिटी. काफी बार है ना, हम सोचते हैं कि हम अकेले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, एंड देन हम लोग वी गो आउट कि यार बस दिस इज बिजनेस, मुझे शुरू करना है, दैट्स इट एंड आई कैन डू इट अलोन. नॉट रियली ऑलवेज वर्क दैट वे. वी नीड टू फाइंड ए टीम. सो मैं हमेशा इस चीज पे बहुत एम्फेसाइज करता हूँ, फाइंड द पीपल यू वुड लाइक टू वर्क विद, who complements you, who brings different skill sets in your team on the table. जो स्किल सेट्स आपके पास नहीं है, आपकी टीम में दूसरों के पास है. आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हो, क्या आपके पास डिजाइन के लोग हैं, क्या आपके पास कॉमर्स या बिजनेस बैकग्राउंड के लोग हैं, या मार्केटिंग और सेल्स बैकग्राउंड के लोग हैं. बहुत जरूरी है कि आपके पास डोमेन एक्सपर्ट्स हैं. आप वेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स है क्या टीम में? Like it's very important to build the right team. So before a startup, what you need to do is also always finding and hunting down the right team who you will execute this with, who will take the as much as ownership like you have in it. क्योंकि स्टार्टअप बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट दैट इजी. अभी लगता है बिल्ड तो कर दोगे, शुरुआत भी कर दोगे, बट उसको सस्टेन करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज नॉट दैट इजी. व्हाई? सिंपल है यार, जर्नी इतने सारी तकलीफ आएगी, इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, एंड यू हैव टू ऑलवेज हसल एंड फाइंड आउट वेयर कैन आई फाइंड दिस रिसोर्स. कभी टीम का इशू, कहीं पे पैसे का इशू, कहीं पे टेक्नोलॉजी का इशू, कहीं पे किसी और चीज का इशू, कभी लीगल इश्यूज आ गए, पेटेंट रिलेटेड इश्यूज आ गए, किसी ने सू कर दिया. So all the time, basically, you have been thrown into like a world where a lot of challenges are there, and like you have to face that. So what keeps you going there is a strong team, a strong set of mentors also. हर स्टेज पे लोगों को अलग अलग mentors की जरूरत होती है. तो find people who can help you in this journey, who can guide you, who can support you financially, who can support you emotionally, who can support you with their intellectual capabilities. Find the mentors who can provide this knowledge in the tough times. When it gets really tough, that's the time you need support. चलो, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ. Yes, whatever, even if it is a service. सर्विस भी क्या होता है, आप किसी न किसी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हो ना. Doesn't matter whether it's a product or service. Let me try to read some of the questions. How to find market size and potential for my idea and numbers? Research. This is the research part, the homework you need to do. Understand कि आपके customers कहाँ है सबसे पहले, वो कितना बड़ा market है, वो कितने ऐसे type के लोग हैं. Is this a particular age group of 25 to 40-year-old, those who are suffering? Is it like men and women both? Is it students? Is it a children community? Or is it like, college going students? Is it a working class?
Is it like the people in residential living in a particular residential colony? Is it people in rural market or urban market? Segment करो उसको, market को clearly identify करो कहाँ है. Don't tell me पूरी दुनिया is our market. The entire world is our suddenly market. फिर कहीं से शुरू करोगे ना. Identify किससे शुरू करना है. सबसे पहले किसको एड्रेस करोगे. अब सिंपल टेक एन एग्जांपल. वैक्सीन बिल्कुल नहीं है. वैक्सीन का मार्केट पूरी दुनिया है, सबको वैक्सीन चाहिए, राइट. और कहीं ना कहीं से तो उन्हें शुरू करके तो अचानक से पहुंच नहीं जाएगी. स्टार्ट आइडेंटिफाइंग से पहले कहाँ जाना है, उसके बाद इस मार्केट में, उसके बाद इस मार्केट में रोल आउट प्लान. और सिंपल इसी तरीके से आइडेंटिफाई यू स्टार्ट. अचानक से तो यू विल नॉट स्टार्ट सॉल्विंग इट फॉर एवरीवन. कुंज का क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोवाइड द प्रोटोटाइप इफ योर स्टार्टअप इज रिलेटेड टू अ सर्विस rather than a product. Start by getting one client. Talk to people जिनको तुम ये सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हो. स्टार्ट विद वन. इफ यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट टू सॉल्व देम, स्टार्ट ट्राई टू सेल देम सर्विस. उनको फ्री में स्टार्ट करो किसी को, मे बी, सो दैट दे कैन ट्राई देयर हैंड्स ऑन इट. They can give you some early user feedback before you start rolling it out to larger set of customers. Get early on some feedback from them. कुछ guinea pigs कहते हैं ना इन्हें. Who are your guinea pigs who will help you get this feedback? Who are your best friends in the community? कौन है जो आपके ambassadors हैं? Who will like go and willing to take that first vaccine? Who will be the first one to willing to experiment with your service for the first time and give you that feedback? Start with them, but don't start with your parents, because they may not tell you the right thing. They may want to please you. Oh wow, मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बेटी बहुत अच्छी कर रही है. क्या solution build किया है, क्या product or service, क्या startup, उन्हें तारीफ करनी है. But they may not necessarily give you the best critical feedback you need. So it's very important to ask feedback for people who are having this pain point. Is it required to have a domain knowledge if you have an idea in field other than yours? I think say domain knowledge होना जरूरी है. You can learn and study. You can ask people, some expert on your team. You can have that person may have that specific knowledge. You don't have to be the expert in that, but at least you need to have good understanding of it. समझ में तो आ रहा है करना क्या इस बिजनेस के अंदर. अगर वो भी समझ नहीं है, कुछ नहीं पता, then it's very difficult. Or if you are open to learn new things. Does prototyping give boost to startup? Absolutely. I think prototyping is one of the best ways to figure out, before you build the main solutions. Mayur, depend करता है यार business पे ऊपर, if one should go with niche and then to expand. It really depends. What kind of, some businesses are bound to succeed only if they can scale. उनका वॉल्यूम का ही गेम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है. अगर वॉल्यूम नहीं है तो दे विल नॉट सर्वाइव. If you already have such a strong competition, the way for you to really become successful is, do you have a strong way to enter into the market and penetrate it as much as you can? And how do you do that? What is your go-to market strategy for this to capture the market? और अगर if it is a really clear niche problem you are trying to solve, जो कोई और अटैक नहीं कर रहा है, कोई एड्रेस नहीं कर रहा, उसके अंदर ही तुम्हारा बहुत बड़ा मार्केट है. The problem you are trying to solve is very different from what others have been doing, or if you are doing it in a much better way, pick your niche. Niche always works, so that you are differentiated. लोग आपको same bucket में comparison नहीं करेंगे. सभी जूते नहीं बेच रहे हैं. You are doing it differently. So I'm trying to read all the questions and answer. We can do one more thing. You can also unmute yourself and speak up, and then I can answer, or you want to continue writing on the chat? Hello, sir. Yes, Kirti, go for it. Sir, actually, what are some of the government schemes that can help a startup, like financially? Or incubation is an option for us? I think it's a good question. I may not be able to answer all, the question about all the financial schemes and everything. Simple research yaar. Government की website पे जाओ, Startup India या local, national wali या state level wali, and then you'll find all these schemes there. I'm happy to share these resources even later on.
But abhi, like, I don't have all the names on my, in the top of my mind. Second question is, what was your second question, Kirti? Uh, is the incubation my option Yes, for? absolutely. I think incubation is such a good way to start your journey. It's like, incubate कर रहे हैं ideas को. जब जिस टाइम पे आइडियाज जनरली वैली ऑफ डेथ में चले जाते हैं, लाइक शुरुआत तो करते हैं और फिर वो वैली ऑफ डेथ में चले जाते हैं क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, तो मेंटरशिप नहीं मिल रही होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है. एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स हैव बीन क्रिएटेड विद द सोल पर्पस टू इंक्यूबेट दिस आइडिया, जब वो उस वैली ऑफ डेथ में जाने से बचा लें उनको, जब उनको नेसेसरी सपोर्ट जो चाहिए वो दे दे, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो मेंटरशिप सपोर्ट हो, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट हो, या जगह हो, whatever that support is required, these incubation centers help accommodate that. They provide you with that support. और उसके लिए लोग चार्ज भी नहीं करते हैं. What else do you want? So I think incubation is a great way to start, taking that first steps. It's a very safe environment that incubation centers create for you to make mistakes and learn from it. They ensures even if you're falling, तुम गिर भी रहे हो ना, तो वहां पे उन्होंने एक नेट लगा रखी है कैच करने के लिए. It'll be easier for you to rebound. Sir, what if the incubation centers reject our idea? It's okay. Understand from them why they rejected it. किस कारण से रिजेक्ट किया. अगेन एक चीज बताता हूँ, रिजेक्ट नहीं होता है कुछ भी है. ये रिजेक्शन वाली लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड किस कारण से किया, मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, या हो सकता है उनकी कैपेसिटी फुल हो, इट वॉज हार्ड बिकॉज उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो इतने ही आइडियाज को इंक्यूबेट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो मे बी आस्क देम, कैन यू रेफर मी टू सम अदर प्लेस, कैन यू हेल्प मी, गिव फीडबैक, राइट. फीडबैक ले उन लोगों से, Yeah. या किसी और इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई कर दो. बहुत Hmm. सारे अब तो लाइक कॉलेजेस, जितने कॉलेजेस है उतने इंक्यूबेशन सेंटर है, और इंडिया में हर गली गली में कॉलेज इंक्यूबेशन सेंटर है nowadays. Yes. तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लम कि यार हमें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे. रिसोर्सेज आर जस्ट देयर. आर वी एबल टू गेट दैट रिसोर्स और नॉट, हम लोग उसको ले पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. और क्वेश्चंस बोलो. आई एम ट्राइंग टू आल्सो रीड सम. Where can we find good mentors who are ready to help a student who is starting to know now? Great question. Again, connect with LinkedIn, like leverage LinkedIn to connect with these mentors. Write an honest message, prepare a message, be professional. Tell them this is the, I'm trying to work in this industry, in agriculture space. I'm trying to build this startup. I have this idea. I would like to seek your mentorship because you have been an agri-tech startup founder. You have solved this problem. I have these questions from you. So when you're reaching out to mentors, know why you are reaching out to them. Know very well what do you want to learn from them. Always be ready with the right questions that you want to ask them, and make best use of their time. So mentorship ke liye, people will be so willing to help. It just, are you ready to also receive it, and what is the structure you have created around it to make best use of mentors time. ये मान के चलो ये सब mentors लोग busy लोग होते हैं, but they are also wanting to give their times. वो भी अपना टाइम देना चाहते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट है हम उसके टाइम को, उनके टाइम को वैल्यू कैसे करते हैं, और हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू get the best of their knowledge and their time and expertise. किसी के पास नहीं है expertise, they will ask them, can you refer me to someone who can help me. You will find mentors also referring to other mentors very easily. कि यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मेरे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, यहाँ से आप इनसे बात कर लो. They will refer you, they will do a warm introduction. Another way is लिंक्डइन के अलावा कम्युनिटी. आपकी लोकल कम्युनिटी में देखो, आप लोग अहमदाबाद में हो, आस्क योर सीनियर्स या जिन्होंने स्टार्टअप फाउंडर्स रहे आपके इंक्यूबेशन सेंटर में, आस्क इंक्यूबेशन सेंटर टू हेल्प यू कनेक्ट विद द पूल ऑफ मेंटर्स. They can match you up, they can do a matchmaking and pairing up of mentors for your startup. So all of these facilities and services generally an incubation center can provide you. इसीलिए इंक्यूबेशन का बहुत फायदा होता है. Where will you go and look out for and find these mentors? And यहाँ पे incubation center बहुत आपकी लाइफ इजी कर देता है.
और क्या क्या क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू गो बैक. Bringing Dev ने कहा bringing Li-Fi into work in India. Nice, Dev. I'll connect you to this friend of mine called Deepak Solanki. I don't know if you know him. Google his name. He has been doing this from last 5-6 years now. You know, the working on Li-Fi technology with this company called Velimini. Check it out. And he has been doing it. And he was a college student at the time when he started this company. And now he's like working with Airbus and Boeing, all of these big companies to even create Li-Fi, you know, in airplanes and many other practical applications of Li-Fi. Could you get enough courage to leave my particular field and do something unique? So ये ना रिस्क मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट आपको पर्सनल आपका रिस्क असेसमेंट आप ही को करना है. इसका आंसर किसी और के पास नहीं है. Look at your own priorities. What is important for you at this point in your life or in your career? Is it making money? Is it supporting family? Is it everything is sorted? You know, मेरे को तो startup build करना है. I don't want to do a corporate job. Look at your own priorities. It's not a question कि मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए मुझे भी करना है. There is no peer pressure कि the entire world is, you know, going to start something. मेरे को भी जाके start करना है. अरे सभी लोग करेंगे तो स्टार्टअप्स में काम कौन करेगा, कंपनीज में भी काम कौन करेगा, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ओन प्रायोरिटीज. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू at your stage of this career at this time, and then make your decisions accordingly. How and when did I start my journey? यार वो क्वेश्चन हम अलग से ले लें, because I think people may not be interested in listening my story and journey and want to learn more on this side of, you know, startup related thing, but happy to do that session also sometime. In nutshell, मैंने ना अपनी जर्नी में बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए completely differently, you know, like मैं कुछ और कर रहा हूँ, jump into something else and then jumped into something else. So it's a very entrepreneurial mindset what I carry, and that helps me start every time, you know, taking up new challenges. So मैं एक particular path पे जा रहा हूँ, and then, you know, like I'm someone who's very kind of risk taking, or if I don't take risks or, you know, challenge myself, I'm not really growing. So that is the mindset I carry, that growth mindset where I'm taking risk and start my journey at, you know, completely something from scratch. Is it better to have a service tax registration than incorporating the startup in its infant stage, or is it the opposite? ये सब बाद में हो जाता है. पहले तो even before you register, actually, you know, start working with the prototype and start getting some feel in the market, like test करके देखो before you do official registration. That is required and important after a point of time. But you know, पहले let's say 5 कस्टमर से interact तो करके देखो पहले तुम्हारा प्रोडक्ट भी रेडी है कि नहीं, बिफोर यू स्पेंड सो मच ऑफ मनी इन, यू नो, द लीगल स्टाफ फॉर सेटिंग अप ए कंपनी एंड ऑल ऑफ दैट. फर्स्ट प्रोटोटाइप की टेस्टिंग करो. और ये सब तो हम बिफोर ए स्टार्टअप वाली बातें कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन और एनीथिंग. सुपर अर्ली, इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट. पहले तुम्हें वाटर टेस्ट करना है बिफोर यू जंप योरसेल्फ इनटू इट. पत्थर मार के देखना है उस पानी में, टच करके देखना है, पाव डाल के देखना है बिफोर यू टेक द होल फुल प्लंज. और वो कर रहे हो तुम बिफोर ए स्टार्टअप. हाउ डिड यू गेट दैट? नाउ इज द टाइम. सॉरी कवनप्रीत, मुझे समझा नहीं आई थिंक ये क्लियरली. व्हाई डोंट यू एलोबरेट दिस ऑन ए बाय स्पीकिंग? अनम्यूट योरसेल्फ. लाइक सर, अभी जैसे एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है ना शेयर मार्केट है, ठीक है. मैं टोटली वही फील्ड से बिलोंग करता हूँ. मैंने बहुत रिसर्च किया और वो मैंने पूरा लॉकडाउन उसमें बिता दिया. और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं पेट्रोलियम इंजीनियर बनूं या फिर नहीं, मैं वही स्टडी कर रहा हूँ. बट आप एक श्योरली आप वो स्टेप ही नहीं ले सकते ना कि आप मतलब स्टडीज पूरी तरह से छोड़ दो और फिर आप यही फील्ड में चले जाओ. ना फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती और फाइनेंशियल बैकअप भी आता. मैं समझा. चलो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कवनप्रीत.
आप में से किस किस को यहाँ फेलियर से डर लगता है कि यार पता नहीं फेल हो गए तो शुरू तो किया और पता नहीं आगे क्या होगा, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. Charvi is raising hand. I'll give you a chance, Charvi. Do you want to speak now? Oh, acha, oh. Niket, okay. Or why don't you message in the chat if you are scared of, failure, pata nahi, this uncertainty with this whole startup, kya hone wala hai? So I will say, this is the best time to keep failing. जितना जल्दी फेल हो लोगे ना उतना अच्छा है. And the earlier you will fail, you will know what mistakes you will avoid the next time. और कॉलेज एनवायरनमेंट में तो बेस्ट होता है फेल होना. हम लोगों का माइंडसेट हमेशा से ऐसे बिल्ड किया ना कि सक्सेस इज ऑलवेज सीन एज व्हेन यू गेट एन ए ग्रेड, व्हेन यू आर ऑलवेज पासिंग द एग्जाम. बट जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और स्पिरिट डेवलप होती है ना वो फेलियर से भी होती है. बिकॉज समवन हैज रिटन इन द चैट, फेलियर इज अ ग्रेट वे टू लर्न और टू नॉट गेट स्केर्ड ऑफ इट. embrace it as it comes along. Take this as part of this journey, कि शुरुआत हो रही है. It's not the end. Failure is never the end of a journey. It's always the beginning of something new. I don't want to sound so philosophical, but honestly, ये mindset दिमाग से निकाल दो. लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे. And it's okay. उन्होंने थोड़ी ना शुरू किया. It's your journey. सब लोग अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपने चैलेंजेस में फेल हुए हैं. But we don't talk about failures enough. We don't share that enough. But there are so many of us, like we have failed. So get comfortable with this whole idea of, failing faster. And the faster you Sorry, sorry. Yeah, sorry, I was muted. Yeah, so I think great question, Vivek. Uncertainty on, in a job or a startup, क्या decide करना है? Again, घूम फिर के question आता है, what is important for you? You don't let anyone else decide these answers for you. You decide what you want in life at this point. फ्यूचर का अलग है जो होता रहेगा. इस पॉइंट पे तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मान लो मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब है और आई डोंट थिंक सो आई एम इन अ स्टेज वेयर आई कैन स्टार्ट राइट नाउ. आई हैव टू एक्चुअली सपोर्ट माय फैमिली. व्हाट डू आई डू? I will do what is important at this point to help me eventually start. So I will take up a job. In the meantime, मैं उसके साथ साथ में शुरू कर दूंगा स्टार्टअप का कुछ. I'll do it as a side hustle, as a side experiment, just to learn. And when I'm ready, I will quit and then do it. Priorities change over time. Just understand your own priorities कि तुम्हारे लिए क्या important है. When I quit my job एक बार 2014 में मैंने एक स्टार्टअप के साथ अपनी जॉब क्विट की थी. मैं आईआईटी बॉम्बे में एक एडटेक स्टार्टअप में काम करता था. And when I was about to quit that job 4 months after, the one thing I asked my parents, Mama, Papa, ये मुझे बताओ, if I quit this job, how difficult our lives will be, or do you think we will be fine for a year or so? आप मुझे बताओ कितना डिफिकल्ट आ सकता है या नहीं. अगर नहीं आ सकता है, नई डिफिकल्टी होगी, थोड़ी बहुत होगी, मैनेज कर लेंगे, तो आई एम क्विटिंग. और नहीं, देन आई विल कंटिन्यू और आई विल लुक फॉर समथिंग एल्स. बट देन आई एक्चुअली क्विट. जैसे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. आई अंडरस्टैंड. मैंने अपनी रिस्क असेसमेंट किया, मेरा नीड्स का असेसमेंट किया कि मेरी ज़रूरत क्या है, जो मेरे से इफेक्ट होने वाले हैं उनकी ज़रूरत क्या है. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इफ आई वांट टू गो दिस पाथ और दिस पाथ. Not getting carried away with my emotions or getting carried away by the peer pressure कि सब लोग ये कर रहे हैं, मुझे भी ये करना चाहिए. And if you think all is fine, like start.
Why are you waiting for? And this is the time, like in your 20s, best time to make mistakes, take risks, start something. You will learn so much. You will be such a different person altogether. More questions. Does it answer your question? How is it going so far, actually, before I get into more questions? What should be the internal management system in case of the startup? Mayur, yaar, ye bahut bada question hai. I don't know if it is a small question or I have a one answer, short answer for it. और ये तो सब बिफोर स्टार्टअप वाले क्वेश्चन नहीं है मयूर यार, ये सब वंस यू हैव ए स्टार्टअप वाले क्वेश्चन है. Hello. Yes, yes. So, if I Kirti, have a Kirti, आप yes, message लिखो. I will rather give chance to those who have not spoken yet. Not yes, to discourage you, but because I want to make sure, out of 81 people here, others are also getting a chance, fair chance to speak up. तुम अपना क्वेश्चन चैट में लिख दो. Meanwhile, others who wants to jump in. Yeah, hi, Alap here. Yes, yes. Yeah, so Alap here. Hi, Arap. Hi. So actually, we are working on something, and like it is a service, and we are not fully developed a prototype of it. And there's this opportunity already. Like there's someone when I was conversing with someone, he came up with like we are in need of this. And so, like, should we pitch the idea directly to them that we are building something and you should be our first customer, or should we wait for our platform to be ready? I will say start testing it out with them already. जैसा build कर रहे हो उनसे पूछो क्या pain points है. Try to really help build a solution that works for them. Start this conversation. Don't wait for the first platform to get ready and then you go out to them. वो process already शुरू हो जाना चाहिए उन लोगों के साथ conversations and बातचीत to figure out before you build something. Because in your head you will be thinking, this is the solution that will work for them right now, and you're not even talking to them. तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले build करके उसके बाद उनके पास जाओगे solution लेके. Instead of that, build something. Sorry, instead of first building the whole final your product, start working with them hand in hand to build a solution that may work for them. So that is what, like, they are not they won't wait for us to launch our product, and we don't want to be like that, like कि पहले we commit something and then we won't be give it on the timeline. So that is why we are battling in the team right now, like what should we do? I hear you. I think so. The question more is, will we be able to deliver what we are committing? Do we have the resources to commit ourselves to meet their needs, right? Not exactly like that. We can we have the capability to do so, but you can see like there we face a lot of problems in between, and we don't want to first customers, if he's coming directly, we don't want to scare them away, like they are not capable of delivering on time. So, yeah, I guess that question you said. Okay. I think if I'm in your place and if I have a clear picture of my team's capability that this is what we can deliver, I will go and commit myself and really deliver on it. I will not be worried about just because we don't have something ready right now that will not be ready with the solution in next few weeks or in a month. We will. So it's really knowing your own strengths and awareness of your team and what you're building. But if you're confident about it, I would commit. I will not let the customer go. If you're really building something that is solving their pain point, and it's okay if you won't do it, someone else will do it. Thank you so much. No worries. क्या time हो गया? Let me look at the time. We have 5 more minutes.
have an idea before sharing it to anyone. How can I secure it from leaking? Great question, Kirti. I think I forgot to talk about this, but many times people don't pitch their ideas thinking कि मतलब कीर्ति का आइडिया तो यहाँ पे दिशान और विवेक और अनीशा और साची मिलके चोरी कर लेंगे and then they will build something, right? That's why they joined this call. कितने लोगों को है fear actually? Yeah, कीर्ति, so true, right? मुझे भी था ऐसा पहली बार में, I was like so scared. What if I share this and then everyone else is here to just steal this? And it's a very common dilemma to kind of get into. But I think हमें लगता है कि आइडिया हम ही पहली बार सोच रहे हैं. जाके गूगल करके देखो एक बार, जाके मार्केट रिसर्च करो, तुम्हें रियलाइज होगा कितनी बार कितने लोगों ने ट्राई कर लिया. At the end of the day, it's not about the idea, it's about the execution of that idea and how are you implementing and executing that. That's where people fail. Ideas तो improve होते रहते हैं. Idea एक limited नहीं होता, idea is always evolving. But the execution of that idea is what really matters at this. और लोगों के पास खुद के पास अपने इतने problems हैं ना to solve, to work on. Why would they even do it? Even if they decide to do it, can they execute it better? And if they can execute it better, then I think they were the best ones to actually do it. Because if you are not sure about your execution better than theirs, then I think you are anyways failing their idea. And it's better someone else do it. Or either you do it better than others. वो हमेशा रहेगा. And अभी तो तुम ये बहुत early stage ideas के. Yes, once you reach a stage where you have you're actually out in the market and then you are trying to build something new, be ahead in the curve from your competition, that's a different stage. वहाँ पे patents होते हैं, IPs होते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है. But जिस stage पे तुम हो वहाँ पे केवल idea है, अभी कुछ किया ही नहीं है तुमने. यहाँ पे केवल idea होने से कुछ नहीं होता है अगर उसका कुछ नहीं किया तो. You have to do something about that idea. You have to go out and build it. At least build an MVP, build a prototype, build a business model around it. So many people have tried it already. And asking your curious questions. Really appreciate it. If you have more questions, you can also reach out to me. You can connect with me on socials. I'll post my socials here. I think if that's easy for you. My LinkedIn, I'm on Twitter, everywhere I'm on with my name. So feel free to connect with me. It's basically Anurag Maloo everywhere. And if you have any questions, let me know. Happy to help. Participate in the community events. Ask for help. Is Drashti here? Still here? Alap, Drashti, and then PDPU team. Thank you so much. Ask them for the support. They, I'm sure, will continue to providing. Shani, Drashti, Dev, Amay. A lot of these people are, some incredible people in your ecosystem. And who will help you in your entrepreneurship journey. They have great set of networks of mentors and experts they can connect you with, and make best use of the resources you have in hand. So yeah, and let me know any feedback you have for me, anything you want to say. I'm happy to listen. So I will mute myself and I'll let you speak. Thank you so much, sir, for the extremely interactive session, and it was very helpful. It was an honor to have you. Thank you, FOET, and thank you to all the participants for attending this session. If you have any more questions, feel free to ask. You can have 2 more minutes. Thank you, Bensi. Was it helpful?
Do you want to write on the chat? Did it help you in any way? Was it worth 60 minutes of your time, or was it a waste? Anurag, you're on mute. Oh, thank you. Thanks for your feedback. I'm glad you find it helpful. And I'll tell you, some of you were asking my journey. So I think you can follow me somewhere on this hashtag called Finding My Everest. And I think you will get to know my story, especially around why I do what I do. And yeah. Thank you so much. Thank you, everyone. Anurag. Thank you for Everyone. accepting. Anything else, Drashti? Or No. Does anyone have any question? If you have any question, please go ahead and ask him. Okay, I think there are a lot of thank yous in the chat box. So I'm hoping there are no more questions. In case of anything, you can get in touch with the IIC team and we'll try and connect with Anurag, get back to you with the answer. And all in all, thank you so much, Anurag, for accepting the invite and sharing your experience and the experience you have got throughout your journey in the entrepreneurial ecosystem with all the youngsters. Thank you, Drashti. I Thank think it'd be nice for everyone to turn on their cameras and maybe we can take a photo. फोटो के लिए सब कैमरा ऑन कर लेते हैं. और जो नहीं कर रहे इसका मतलब अपनी सीट्स पे नहीं है. Is that an assumption I can make? If you're not on your seat, it means you're not turning on the camera. Oh, half of them have not turned it on. Let's see, you have 10 more seconds. Maybe we should take a photo then. Smile, everyone. Alap has the best smile. Chalo, everyone, then. Nice to meet you all, and thank you.